Good morning, dear students. I hope everyone is fine. Have you done yesterday's work? I hope everyone has done the work because daily we are not doing so much work that you can feel burden. Okay? When you will feel burden, it means work is not done in time. So complete your work time to time. Okay? If you are doing daily work daily, then there is no burden. Otherwise, no burden will be there. Clear? So, as you all know, we are doing sixth chapter, combustion and flame. Okay? So, one of the most important invention. Okay? One of the milestones in the history of civilization was the invention of fire. Okay? जो फायर की इन्वेंशन थी, एक बिगेस्ट अचीवमेंट है सिविलाइजेशन मीन्स ह्यूमन लाइफ में. क्लियर? एक बिगेस्ट अचीवमेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग एवरीथिंग इज बीइंग डन. फूड इज बीइंग कुक्ड इन ऑटोमोबाइल्स, इट इज रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज, एंड देर आर सो मैनी थिंग्स वेयर इट इज रिक्वायर्ड. क्लियर? एज एवरीवन वांट एनर्जी, as human beings are there, they also need energy for doing their daily routine. Okay, so food human beings को कहाँ से मिलता है? Sorry, energy human beings को कहाँ से मिलती है? That is being given by the food only. Okay, the food which we are eating, that is being utilized by us. जो food हमारी body ने utilize किया, that is being utilized to give energy to the body. उससे body को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. ओके, सो इन अ डेली लाइफ वी सी मैनी थिंग्स आर देयर, मैनी टाइप ऑफ फ्यूल्स आर देयर, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, केरोसिन है, सीएनजी है, मैनी थिंग्स आर देयर. किसी का यूज किसमें यूज इन कुकिंग फूड, टू रन ऑटोमोबाइल्स, इन इंडस्ट्रीज. सभी का हर जगह अपना पर्टिकुलर यूज है. ओके, कि इसका यूज कहाँ पे होगा. क्लियर? So these everything are having their different uses. Different fuels का different use होगा. Clear? Like CNG is can't be used in cooking food. Yes, am I right? Okay. So as we are discussing combustion and flame, like if the light gone, nowadays so inverter are there, but the people who are not having inverter, what they are doing? They are just lighting the candle. They light the candle. Yes, then candle gives a flame. कैंडल से क्या मिलती है? फ्लेम मिलती है जिससे लाइट होगी. बट कोल इज ऑल्सो बीइंग बर्न्ड. ओके, कोल भी तो एनर्जी और हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बट इट विल नॉट गिव फ्लेम. सो दोनों में डिफरेंस क्या है? दैट फ्लेम इज बीइंग प्रोड्यूस बाय द व्हेन यू विल लाइट द कैंडल. ओके, if we are just light the candle, flame it will be here. And if we are not, if we will talk about coal here, in coal flame will not be produced. Clear to all? So like if we will discuss कि combustion के लिए what are the things required for the combustion of a substance. combustion के लिए चीज़ें ज़रूरी क्या क्या है? First thing, there should be presence of a combustible substance. क्लियर? मीन्स जो सब्सटेंस है वो कम्बस्टिबल हो, दैट कैन बी बर्न्ड इजिली. क्लियर? जो बर्न्ड हो सके इजिली, दैट इज वाई प्रेजेंस ऑफ अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड. क्लियर? नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ द सपोर्टर ऑफ कम्बस्शन. प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कम्बस्शन मीन्स जिसके कारण कम्बस्शन पॉसिबल है, जो कम्बस्शन को सपोर्ट करे. और वो चीज़ क्या है? ऑक्सीजन और एयर. Okay, we have done one activity also. If we will burn the candle and we just close the upper side of the upper surface of the candle. अगर हम कैंडल को किसी जार से, किसी टम्बलर से क्लोज कर दें ऊपर से, light will not enter. Okay, if the light means sorry, oxygen or air will not be entered. Okay, after some time it will burn off. Why it will burn off? Because we know if there is the combustion, there should be some supporter for the combustion. Supporter means oxygen या air की presence होनी चाहिए. But if it is not there, then what will happen?
the candle will burnt off, the flicker will off, and it will then give smoke. Okay. As we are talking about combustion here, combustion कैसा process है? Chemical process. Yes. As we know कि there are the two type of processes, chemical process and physical process. As the name is telling, chemical process है, it means there is the formation of a new substance. Chemical process में there is the formation of a new substance. In physical process there will be the no formation of a new substance. Okay. Chemical में like changes will be there, sound production होगी, gas formation होगी, smoke will produced, and new product is formed. These things we have done earlier also. Okay. Opposite to these physical changes में ऐसा कुछ नहीं होगा. In physical changes there will be the formation of no new substance. कोई नया substance नहीं बनेगा. Smell will not be there. Gas will not produced. Heat and energy will not be there. So this is the difference between physical and chemical changes. Okay. So combustion क्या है? It is a chemical change. Clear? So we can say a chemical process which takes place in the presence of oxygen or air. Okay. Combustion क्या है? एक chemical process है which takes place in the presence of air and oxygen. Clear? It is the combustion. Clear? So there are the two type of combustible substance. Combustion. One is combustible. Another one is non-combustible. Okay, there are the two type of substances. Combustion means which can burn easily in the presence of heat and means presence of oxygen or air, जो easily burn हो सके. Clear? Like paper है, wood है. Okay. And non-combustible which cannot be burnt easily, जो easily burn ना हो सके. Okay. Like iron nails है, iron है, stone है. These cannot be burnt easily. Burn नहीं होंगे. Okay. So we were discussing कि what are the conditions required for the burning of the substance. कौन कौन सी condition चाहिए? We have done two already. Two हम कर चुके हैं. That is the presence of a combustible substance. And second we have done presence of a supporter. Supporter means air या oxygen की presence. Okay. You can write presence of air or oxygen. Third one is the ignition temperature. Ignition temperature is also called as kindling temperature. Okay, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? Kindling temperature. Name is kindling. Okay, ये वो टेम्परेचर है जो means at the lowest temperature a substance start burning. Clear? It is a temperature at which at the low temperature a substance start burning. Clear? Fuel. Fuel क्या है? Means जो मटेरियल बर्न होता है किसकी प्रेजेंस में? एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. और क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. क्लियर? फ्यूल क्या प्रोड्यूस करेगा बर्निंग पे? हीट एंड लाइट. ओके. So fuels, as they will produce heat also, and fuels will produce smoke also. Smoke भी produce करेंगे. And if they are producing smoke, then they are polluting our air. They are doing air pollution. Okay. And if there is a air pollution, there is the production of the gas. तो gas में क्या हो सकते हैं? Oxides of sulfur and nitrogen. And then what they will do? They will form acid rain. ओके. फ्यूल की बर्निंग से एज वी नो कि हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी ही. दे आर प्रोड्यूसिंग स्मोक ऑल्सो विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द एयर, विच इज हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट. क्लियर? सो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ कंबशन. ये तो है कंबस्टिबल मीन्स सब्सटेंस कितने टाइप्स के हैं. क्लियर? देन कंबस्टिबल कंबशन कितने टाइप्स के? थ्री टाइप्स के. रैपिड और फास्ट, स्पॉन्टेनियस और explosion. Clear? Three types of combustion are there. You can say rapid or fast, spontaneous combustion
and the next one is explosion. Okay, these are the three types of the combustion. Rapid क्या है, मीन्स विच कैचेस फायर इजीली, और जो फायर कैच करके क्या प्रोड्यूस करे, हीट एंड लाइट. ओके, सो एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, एग्जांपल्स यू कैन से एलपीजी, सीएनजी. ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस कंबक्शन क्या है, व्हेन some substance exposed to air they catch fire on their own. ओके, अपने आप फायर कैच कर ले. ओके, एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, व्हाइट फॉस्फोरस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन. देन नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन इज द bursting of the firecrackers. Okay, on Diwali there is so much burning of the crackers and they release smoke. This smoke in Diwali, you can see that at Diwali time, after 2 or 3 days the just sky becomes very cloudy. Okay, and we used to say it is smoke. No, clear, वो कोई smoke नहीं है, that is just it is done by the pollution on Diwali. एक pollution है दिवाली का, that becomes the cloudy environment. Okay, so bursting of cracker is to be avoided. So these are the three types of the rapid or fast, spontaneous और explosion. Clear? Next पे आइए. Then we had done these three. Classification of fuels. Classification of fuels में क्या है? There are the three bases of classification. Three bases classification के. Okay? On the basis of occurrence. On the basis of occurrence, like we will say it is of two types, primary and secondary. Primary क्या है? जिस फॉर्म में वो है उसी फॉर्म में को यूज करना. ओके, इन विच फॉर्म वी आर गेटिंग दीज फ्रॉम नेचर एंड वी आर यूजिंग इन द सेम फॉर्म. क्लियर? इन विच फॉर्म वी आर गेटिंग दीज सोर्सेज फ्रॉम नेचर, इन द सेम वे वी आर यूजिंग दीज. क्लियर? सो एग्जाम्पल्स क्या है, वुड है, ड्राई लीव्स है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है लाइक काउ डंग्स है. वी आर यूजिंग द सेम वे. सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी इज दैट वन इन विच दे आर टू बी एक्सट्रैक्ट. उनकी ट्रीटमेंट करके उनको यूज करना. ओके, लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. सो दे आर टू बी ट्रीटेड फर्स्ट, देन दे आर टू बी यूज्ड. क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेस पे कितने टाइप्स के फ्यूल हैं? देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, liquid and gaseous. Clear? Solid examples we will take here, like wood is there, agricultural waste is there. Okay, now liquid fuels for example कौन कौन से आ सकते हैं? What can be the liquid fuel, like kerosene is there. Okay, gaseous like LPG is there, CNG is there. Clear? So please listen everything carefully. Okay, if we will do comparison here, we are using wood and LPG both at homes. Okay, in some villages, rural areas, wood is being nowadays also it is used. So दोनों में डिफरेंस क्या है? wood और LPG में डिफरेंस क्या है? wood में it will release smoke when it will burn. Okay, and this smoke is responsible for the air pollution. LPG will not release any kind of smoke. Okay, LPG will not release smoke, it will not left any ash particles. Okay, so wood can be produce smoke, ash particles it will not produce. Clear? So difference I have sent to you all, I think you all have learned those difference. Okay, so next is sources के basis पे. We have done three types on the basis of occurrence, on the basis of physical state, and next one is on the basis of source. Renewable and non-renewable. Renewable means which we can renew, जो हम renew कर सकते हैं, which can be replenished easily. Okay, so but I am not saying कि we can use them limitlessly.
we should use everything in a proper way. Okay, we should not think these are renewable, these can be replenished easily, these can be produced easily, so we can use this limitlessly. No, everything should be used in a limited way. Okay, so next one is non-renewable. As the name is telling, non-renewable, these are the sources which cannot be replenished easily, जो easily replenish ना हो सके. Okay, we cannot produce them easily because they take many more years to form. इनको produce करने में बहुत साल लगते हैं, बहुत years लगते हैं. It will take much time. So these are to be used in the limited amount, so that the future generations can also take advantage of these things. Okay, so this is about the basic of chapter which we have done. इतना हम कर चुके हैं अभी तक. Okay, if any doubt is there still in this part, you may ask them in the comment section. Okay, so thank you everyone. Watch it carefully. Doubts in the comment section you may ask. Thank you everyone.